his doctor's team. Directors of NHS Hospitals, well-known face, Dr. Naveen Chitkara, Dr. Shubham Agarwal, Dr. Sandeep Goyal. About the departments, we have Neurology Department, Neurosurgery Department, Orthopedic Surgery, General Surgery, Urology, Cardiology Department, Infertility Department, Psychology Department, Pediatric and Neonatology. I appreciate the presence of all members who participated in this meet. We tried our level best for convening and organizing this meet. As it is the first meet of its kind, I really apologize for any shortcoming and inadequacies of the meet. If any, we assure you all, we will try to solve all or we will do our best in future for in next meets. Once again, I thank to all the participants who participated in Credit Point meet. And the second option is the second state conference of NEMA Women Forum Punjab has been scheduled on 27th of July at Best Western Plus Hotel. All the female members along with their spouses are invited to attend this meet. I would like to call Dr. Reena along with Dr. Veena Vanita Goswami to come forward and give some briefs about this meet. Dr. Reena Kakkad and Dr. Vanita Goswami, please come. Good evening, doctors. I, Dr. Reena Kakkad, President, NIMA Women Forum Jalandhar, feel honored to announce that NEMA Women Punjab is going to conduct second state conference in Jalandhar on 27th of July at Best Western Plus. And it's a privilege that NEMA Women Jalandhar is going to host this state conference. I am thankful to Dr. Parvinder Bajaj, Secretary General NEMA CC and President NEMA Punjab, having faith in NEMA Women Forum Jalandhar, and I am also thankful to the team of NEMA Punjab and NEMA Jalandhar for their guidance and unconditional support. I request all the female members with their spouse to participate in this state conference in large number and make this meet a great success. Thank you. जैसे कि डॉक्टर रीना ने बताया कि 27 जुलाई हम लोग वुमेन फोरम की मीटिंग कर रहे हैं, स्टेट वुमेन फोरम की मीटिंग कर रहे हैं। इस दिन हम लोग हरियाली तीज भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द फीमेल मेंबर्स टू कम फॉरवर्ड एंड नॉट ओनली शो देयर प्रेजेंस बट ऑल्सो एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी जंग तभी जीती जा सकती है जब उसकी जो जवान है वो आगे आके अपने कैप्टन का साथ दे। तो इस मीटिंग को हम सक्सेसफुल बनाएंगे आपकी प्रेजेंस के साथ और एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ। एंड लेट अस टेक दिस CME टू अनदर न्यू हाइट्स। थैंक यू सो मच। Dr. Pavan Kumar, Dr. Harry, Dr. Sumit Batmotra and Dr. Vinayak. Welcome you all in the NEMA family, sir. So, coming to the academic sessions, our first speaker is Dr. Satinder Pal Agarwal. Dr. Satinder Pal Agarwal is a skilled urologist with over 10 years of experience in diagnosing and treating a wide range of urological conditions. He completed his MS and MCH in urology from SMS Hospital, Jaipur, gaining extensive expertise in surgical and non-surgical management of urological disorders. With a commitment to patient care and advanced treatment techniques, Dr. Satinder specializes in minimal invasive procedures, kidney stone management, prostate disorders, urological oncology. He has extensive experience in performing laser procedures for all types of kidney stones and prostate surgery, ensuring precision and faster recovery and improvement patient care. Currently, Dr. Satinder practices as warm welcome to all the delegates from NHS team and my esteemed colleagues. Myself, Dr. Satinder Pal Agarwal, I am consultant urologist in NHS Hospital. Today we will discuss surgical management of benign enlargement of prostate leading to obstructive urinary symptoms like poor urinary straining, incomplete urinary voiding, frequency, urgency and nocturia. As we do day-to-day clinical practice, first of all, any patients of obstructive LUTS above 50 years, first of all we put the patient on medical management, that is alpha-1 blockers like
Urimax or Silodosin or Alfulosin. These are the absolute indications. At the outset, I would like to thank Nima NHS Hospital for giving me this opportunity and present my experience on this new treatment for acute and chronic liver failure. So, when we say a patient has cirrhosis or decompensated cirrhosis, what we conventionally believe that a patient would have ascites, he would be bedbound, he may have bled, he would be in altered sensorium. So these are the classical decompensations of patients who have decompensated cirrhosis. Any goes in and out of hospital with either jaundice, infections, or various other complications like renal failure, hepatic encephalopathy, or patients who develop bleed in the form of black blood stools or hematemesis like blood and vomitus. But now what we recognize is a new syndrome in which a patient who was doing clinically well, he apparently had no underlying chronic liver disease, but he presents to the emergency in a very Nima NHS Hospital for giving me this opportunity and present my experience on this new treatment for acute and chronic liver failure. So when we say a patient has cirrhosis or decompensated cirrhosis, what we conventionally believe that a patient would have ascites, he would be bedbound, he may have bled, he would be in altered sensorium. So these are the classical decompensations of patients who have decompensated cirrhosis. And he goes in and out of hospital with either jaundice, infections, or various other complications like renal failure, hepatic encephalopathy, or patients who develop bleed in the form of black blood stools or hematemesis like blood and vomitus. But now what we recognize is a new syndrome in which a patient who was doing clinically well, he apparently had no underlying chronic liver disease, but he presents to the emergency in a very sick stage that we call as acute and chronic liver failure. So in the hepatology services, nearly 1/3 of patients have acute or chronic liver failure, and it is defined based on very high short-term mortality. So most of these patients, around 30 to 50%, are likely to die in the next 28 days without a liver transplant. So what can we do short of liver transplant? That's what I am going to talk about. So half of the patient with cirrhosis will develop acute and chronic liver failure during follow-up, and data from meeting along with NIMA. And just a word about one of the molecule which is commonly used by one and all, but we need to reiterate the use of hydrochlorothiazide as a diuretic and as an antihypertensive. So we know that hypertension is persistent increase in blood pressure on the walls of the blood vessels, and it kills nearly 1/3 of the Indian urban population is found to be hypertensive, and it is an iceberg disease, which means that howsoever people you diagnose, there are more undiagnosed people with hypertension who sometimes do not have symptoms. And it is the leading cause of cardiovascular disease, including cerebrovascular disease also, strokes. And it affects, as I told you, 1 in 3 adults, and nearly half do not know about their condition, which is raised blood pressure. And guidelines now recommend that thiazide diuretics should be the first line of antihypertensive treatments. We in this part of the world are very happy and safe. We play safe by adding amlodipine as the first line, which should be discouraged, especially in a young patient. Hydrochlorothiazide, thiazide diuretics like chlorothalidone should be the first line. This pie chart shows that when single pill combinations are used, adherence improves and the target blood pressure is reached very early. 6 out of 10 Indians on monotherapy have uncontrolled hypertension. It is better to start them on 2 drugs, but they will not take 2 drugs, however you tell them to. So it is better to start those drugs in a single pill combination. And when CCBs are used as first-line therapy, they do not have many cardioprotective effects. On the other hand, ACE inhibitors and diuretics, when used together, have renoprotective as well as cardioprotective effects. Diuretics are estimated with 5% lesser CV risk and 37% lesser risk of heart failure as they lower the preload also. Hydrochlorothiazide achieves all the targets, efficient BP control, CV protection and patient safety.
Telmisartan hydrochlorothiazide combination is very effective in 24-hour BP control. You just need to give sometimes only one drug, one pill in the morning as a combination pill. And the study outcomes have compared chlorthalidone along with hydrochlorothiazide. They have found both to be effective in lowering BP, but the side effects of chlorthalidone are sometimes more, especially dyselectrolemias like hyponatremia and hypokalemia. HCTZ and chlorthalidone are also effective in all races and across all populations, especially in blacks. This was a trial published in Lancet Legend Hypertension, which told that it is both efficacious, the telmisartan hydrochlorothiazide combination, as well as it is safe. So hydrochlorothiazide provides better CV protection in terms of reduced CV mortality, ischemic stroke also, than chlorthalidone. It is also safe in patients with CKD. We can easily give hydrochlorothiazide as a diuretic, as an antihypertensive in patients who have CKD. I will be presenting today early signs of chronic kidney disease and bridging primary care and approach. As we all are seeing that day by day, we are seeing more and more cases of kidney failure and that too chronic kidney disease. So I will be discussing what will be the early signs and symptoms of kidney disease and the most important, when to refer and how to collectively manage these cases. So first is early signs of CKD. First is edema. Usually it starts from feet and ankle. It is always bilateral and it is fitting. This I am discussing about the renal failure cases only. Change in the urination, new onset hypertension, especially in young, difficult to control hypertension or resistant hypertension, unexplained anemia, unexplained weight loss or unexplained body aches and pains, skin changes, especially itchy, dry skin, muscle cramps or constant fatigue. So these of herpes zoster conforming to a dermatomal distribution, which is a cause of chest pain. Then GIT disturbances, gastritis or gas is the national disease of India. So esophagitis, peptic ulcer and gastritis is very commonly presenting as a chest pain. Acute coronary syndrome will present as ECG changes and troponin elevations, and that's when I come into the picture. You can refer the patient to the cardiologist if he has crescendo in general. So the last slide is do's and don'ts for a chest pain in a single specialty setup or a clinic like yours. Get ECG done in every single case. Do not rely on one single ECG. Get it serially done, especially after half an hour. Quantitative troponin levels, you should buy a machine, and quantitative troponin levels are very sensitive. Card test will not do. Do not dismiss the patients as symptoms as anxiety or gastritis. History taking is still the king. Err on the side of loading a patient and introduce a patient with antiplatelets, like you can give ecosprin, aspirin and clopidogrel, and then refer the patient to a multi-specialty setup where cardiologist is available round the clock. And in a conclusive ACS STEMI, remember that time is myocardium. Do not wait for the attendants to come and any relatives to take a decision. First send the patient to the cardiologist and then he or she can be taken care of. Thank you for your listening. So thankful to Nima. My wife is a part of Nima. She is a Dr. Sahil Sari, Dr. Saurabh Mishra, Dr. Sanjay Kumar, Dr. Narendra Pal ਤੇ NHS ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੈਂਕਸ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵਿਪੁਲ ਕੱਕੜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਡਾਕਟਰ ਬਜਾਜ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਮਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੈਂਕਸ ਡਾਕਟਰ ਰੀਨਾ ਕੱਕੜ, ਡਾਕਟਰ ਨੀਤਾ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਫੀਮੇਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕਸ। but
being a little bit a part of NEMA also. So thank you so much for inviting us all from the NHS hospital. And NHS hospital is a growing hospital. In the last around 7 years, we have made a name in the city in all the fields that we are working on. Today we have seen. नमस्कार, आज NHS अस्पताल एवं NIMA नीमा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई, एक CME ऑर्गेनाइज़ की गई, जहां पर 80 से ज़्यादा डॉक्टर्स डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। और मैं NHS में एज अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ की तरह कार्यरत हूँ। आज डॉक्टर्स के में हमने छाती के दर्द यानी कि चेस्ट पेन के प्रति अवगत कराया, जिसमें हार्ट से रिलेटेड छाती के दर्द एवं बाकी क्या कारण से छाती के दर्द हो सकता है उसके बारे में अवगत कराया गया, जिसमें ये एक जनरल पब्लिक को मैसेज दिया गया है कि कब उन्हें इमीडिएटली एक्ट करके तुरंत सीरियसली लेके चेस्ट पेन को, छाती के दर्द को अस्पताल रिपोर्ट करना चाहिए, एवं क्या इन्वेस्टिगेशन या जांचें करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो छाती का दर्द हुआ है, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स में जो युवा पीढ़ी है उसमें हार्ट की इंसिडेंस, हार्ट की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। इसलिए ये एक जनरल पब्लिक के लिए मैसेज दिया गया इस CME के द्वारा कि कौन सा छाती का दर्द अर्जेंट हार्ट अटैक जैसा हो सकता है एवं कौन से छाती का दर्द बाकी अन्य कारणों के कारण हो सकता है। बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट ने हमारे NHS अस्पताल में इसमें हिस्सा लिया। मैं डॉक्टर सतिंदर, मैं हूँ किडनी स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट। आज हमने जो इस टॉपिक पे बात करी है CME में, आज हमने बात करी है प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए जो जिसका साइज बढ़ जाता है, उसका जो सर्जरी करनी पड़ती है, उसकी जो लेटेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक बन रही है HOLEP, जो हम लेज़र से करते हैं दूरबीन की हेल्प से, उसके बारे में बात करी है। हमारा जो आज मीटिंग का मेन टारगेट था, जो एक मैसेज देना था कि इस HOLEP से हम हर पेशेंट को, चाहे वो हाई रिस्क हो, क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो रिस्क फ्री, कॉम्प्लिकेशन फ्री सर्जरी के बाद अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंजॉय कर सके। जो उसके मन में डर है, जो उसके मन में सर्जरी को रिलेटेड अपनी शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक को लेके सर्जरी कराने के लिए जो डर है वो निकल सके और एक सही डिसीजन लेके सर्जरी करवा के अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय, मैं एज ए कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट NHS हॉस्पिटल में अभी कार्यरत हूँ। आज इस कॉन्फ्रेंस में हमने जो NHS और नीमा के थ्रू ऑर्गेनाइज हुई, इसमें किडनी फेलियर के लक्षण, कैसे उसको जल्दी पहचाना जाए और कैसे जल्दी पहचान के उसका अर्ली से अर्ली ट्रीटमेंट किया जाए, इस विषय पे बात की है। एंड मेरा यही मैसेज है कि किडनी रोग के जो भी लक्षण हैं, अगर किसी भी मरीज़ में हूँ तो जल्दी से नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएँ और अपनी जाँच कराएँ। थैंक यू। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ मिश्रा, लिवर डाइजेस्टिव स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट NHS हॉस्पिटल में। आज इस मीटिंग में मैंने बताया है कि कैसे कुछ जो एडवांस लिवर फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, जिनकी ये केवल एक ही ऑप्शन होता है लिवर ट्रांसप्लांट, उसको एक नई पद्धति के द्वारा कैसे सैल्वेज किया जा सकता है, उनका ट्रांसप्लांट या तो अवॉइड या तो डिले किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा एक्सचेंज। इसको हमने कुछ पेशेंट्स में NHS हॉस्पिटल में किया है, वहाँ पर ये अब अवेलेबल है। तो उसी के बारे में कुछ पेशेंट्स जिनका हमने किया है और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, उसी के बारे में मैंने आज डॉक्टर्स को इस नए एडवांसमेंट के बारे में, जो कि एडवांस लिवर फेलियर में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, यहाँ पर लोगों को अवगत कराया। थैंक यू। मैं डॉक्टर SP डालिया, प्रेसिडेंट नीमा जलंधर। आज NHS हॉस्पिटल के नाल मिल के NIMA जलंधर ने संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिस दे विच साडे NHS हॉस्पिटल तो अलग अलग सुपर स्पैशलिस्ट डॉक्टर्स आए, डॉक्टर साहिल जी, डॉक्टर सौरभ जी, साहिल सिंह जी, डॉक्टर सतिंदर जी और डॉक्टर सौरभ जी, डॉक्टर संजय जी, सारे ने अपने अपने डॉक्टर साहिल जी ने इस तरह हार्ट के ऊपर बहुत वधिया लैक्चर दिता, जिस दे नाल साडी जिहड़ी कम्यूनिटी है उस चीज़ में बहुत फायदा होया। डॉक्टर सतिंदर जी ने नेफ्रोलॉजिस्ट ने, उन्होंने यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने अपने जो भी प्रोस्टेट के उत्ते सीगा उसके ऊपर लैक्चर दिता। डॉक्टर सौरभ जी ने GI के ऊपर, नेफ्रोलॉजिस्ट साडे डॉक्टर संजय जी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छियां और वधिया गल्लां जिहड़ियां सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ दसियां, जिस दे नाल साडी कम्यूनिटी ਨੂੰ बहुत फायदा होएगा। मैं इन्हां सारिਆਂ ਦਾ इतिहास बहुत बहुत धन्यवाद करदा।
जय हिंद।